Hello, dear friends and viewers. Assalamu alaikum. Once again, I'm in front of you. I pleader जावेद अली सैलरो हाई कोर्ट. तो मैं हर बार आपके सामने आ रहा हूँ आप तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का इल्म पहुँचाने के हवाले से जो कि एसेंशियल है. बार बार मैं बता रहा हूँ बिकॉज द वर्ड्स विच आर रिटन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आई ओनली यूज़ such kind of thing which is of course the written form, and of course it is totally the essential and mandatory for we Pakistanis that we must aware from this important law, this very important law. of course ये अपना law जो है constitution of Pakistan 1973 जिसके तहत जो है सारे laws it means it is mother of all the laws. We must watch out, we must listen, and we must aware from the textbook of the Constitution of Pakistan 1973. So let's move. आपको पता है I would like to recalling you the previous lecture which I have delivered before you dears and viewers that हम इस वक्त जो है स्टडी कर रहे हैं अपना part 4 of Constitution of Pakistan. Part 4 was completed. Now we are standing about the part 5 of Constitution of Pakistan 1973, जिसका part 5 का हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि था अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन. जो है लेजिस्लेटिव पावर्स के हवाले से था. और आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि हम जो है रिलेशनशिप जो है फेडरेशन एंड प्रोविंसेस का हवाला और उसका अपना जो है नॉलेज है वो अपना जो है गेटअप कर रहे हैं अपना फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973. नाउ दिस चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chapter number 1 of part 5 was distribution of legislative powers has been completed. This was the chapter 1, and now we are moving towards another chapter of same part 5, and chapter 2. Now let's move and enjoy from the second chapter of the Constitution of Pakistan 1973, and which is present in the part 5 of same constitution. Now second chapter is about the administrative relations between federation and provinces. Wow. Now there are the explanation, there is the words about the administrative relations between federation and provinces. चलो तो इसका अपना देखते हैं कि ये क्या है, अपना किस बात की बात कर रहे हैं. तो चलो इसको पढ़ते हैं. वो भी ऑफ कोर्स इट इज ऑफ कोर्स मैंडेटरी. एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं जो कि प्रोविंशियल और अपना फेडरेशन के हवाले से दिए गए हैं. अब इन जो है चैप्टर 2 में पार्ट 5 के सेकंड चैप्टर में चलो उसको अपना पढ़ते हैं. लेट्स मूव एंड एंजॉय, गेट अ नॉलेज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है 145. टाइटल है पावर ऑफ प्रेसिडेंट to direct governor to discharge certain functions is high agent. 145 article of Constitution of Pakistan 1973. 145 title है power of president to direct governor to discharge certain functions is his agent. Now let's move. Subarticle 1 about the definition. Subarticle 1 of article 145. The president may direct the governor of any province to discharge as his agent, either generally or in any particular matter, such functions relating to such areas in the federation which are not included in any province as may be specified in the direction. Subarticle 2 of article 145. The provisions of Article 105 shall not apply to the discharge by the governor of his functions under Class 1. Article 146. Power of Federation to confer powers etc. on provinces in certain cases. Subarticle 1 of Article 146. Notwithstanding anything contained in the Constitution, the federal government may, with the consent of the government of a province, entrust either conditionally or unconditionally to that government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the federation extends.
Sub-article 2 of Article 146. An act of Majlis Shura, Parliament, may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which a provincial assembly has no power to make laws, confer powers and impose duties upon a province or officers and authorities thereof. Sub-article 3 of Article 146. Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a province or officers or authorities, some as may be agreed or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan in respect of any extra costs of administration incurred by the province in connection with the exercise of those powers or the discharge of those duties. आर्टिकल 146 के बाद आर्टिकल 147 का हम जो है अपना डेफिनेशन पढ़ते हैं. टाइटल है पावर ऑफ द प्रोविंसेस टू इंट्रस्ट फंक्शंस टू द फेडरेशन. Okay, notwithstanding anything contained in the constitution, the government of a province may, with the consent of the federal government, entrust either conditionally or unconditionally to the federal government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the province extends, provided that the provincial government shall get the functions so entrusted ratified by the provincial assembly within 60 days. Article 148 obligation of provinces and federation. Sub-article 1 of Article 148. The executive authority of every province shall be so exercised as to secure compliance with federal laws which apply in that province. Sub-article 2 of Article 148. Without prejudice to any other provision of this chapter, in the exercise of the executive authority of the federation in any province, regard shall be had to the interests of the province. Sub-article 3 of Article 148. It shall be the duty of the federation to protect every province against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every province is carried on in accordance with the provisions of the constitution. Very important. आर्टिकल 148 सब आर्टिकल 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके सामने मैंने अपना इसको जो है एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया. ये जो है फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी प्रोविंसेस हैं अपनी कंट्री में, पाकिस्तान में, वो सारे प्रोविंसेस की हवाले से सिक्योर करे. कैसे? जैसे कि कोई अपना अगर जो है डिस्टर्बेंस है या कोई भी अपना एग्रीशन है, वट एवर सो, तो उस पर अपना फेडरेशन को प्रोविंशियल, पूरी प्रोविंशियल जो भी अपना फंक्शंस हैं उसको अपना सिक्योर रखना है, उसकी हिफाजत करनी है. ये फेडरेशन के जिम्मे है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 148 सब आर्टिकल 3. लेट्स मूव टू आर्टिकल 149. डायरेक्शन टू प्रोविंसेस इन सर्टेन केसेस. सब आर्टिकल 1. The executive authority of every province shall be so exercised as not to impact or prejudice the exercise of the executive authority of the federation, and the executive authority of the federation shall extend to the giving of such directions to a province as may appear to the federal government to be necessary for that purpose. Sub-article 2 is omitted and sub-article 3 of article 149. The executive authority of the federation shall also extend to the giving of directions to a province as the construction and maintenance of means of communication declared in the direction to be of national or strategical importance. Sub-article 4 of article 149. The executive authority of the federation shall also extend to the giving of directions to a province as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace
to the peace or tranquility or economic life of Pakistan or any part thereof. It was Article 1449. Now move towards Article 150. Full faith and credit for public acts etc. Wow. Full faith and credit shall be given throughout Pakistan to public acts and records and judicial proceeding of every province. Very important. Of course, Article 151, interprovincial trade, sub-article 1, subject to class 2, trade, commerce and intercourse throughout Pakistan shall be free. Sub-article 2 of Article 151, Majlis-e-Shura Parliament may be law impose such restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse between one province and another or within any part of Pakistan as may be required in the public interest. Sub-article 3 of Article 151, a provincial assembly or a provincial government shall not have power to class A of Article 151 make any law or take any executive action prohibiting or restricting the entry into or the export from the province of goods of any class or description or class B. Impose a tax which is between goods manufactured or produced in the province and similar goods not so manufactured or produced discriminates in favor of the former goods or which, in the case of goods manufactured or produced outside the province, discriminates between goods manufactured or produced in any area in Pakistan and similar goods manufactured or produced in any other area in Pakistan. Sub-article 4 of Article 151. An act of a provincial assembly which imposes any reasonable restrictions in the interest of public health, public order or morality or for the purpose of protecting animals or plants from disease or preventing or alleviating any serious shortage in the province of an essential commodity shall not, if it was made with the consent of the president, be invalid. Okay. Article 152. Acquisition of land are for federal purposes. The federation may, if it deems necessary, to acquire any land situated in a province for any purpose connected with a matter with respect to which Majlis-e-Shura Parliament has power to make laws, require the province to acquire the land on behalf and at the expenses of the federation, or if the land belongs to a province, to transfer it to the federation on such terms as may be agreed, or in default of agreement as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan. Of course, the 152 article is very much for the knowledge, क्योंकि ये इसमें क्लियरेशन लिखी हुई है कि अगर फेडरेशन को जो ज़मीन है वो चाहिए एक्विजिशन लैंड फेडरेशन पर्पसेस के लिए चाहिए प्रोविंस की, तो जाहिर है वो ले भी सकती है, अपना प्रोविंस से ले भी सकती है, बट अपना अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट होता है उस हवाले से अपना वो प्रोविंस से बिल्कुल ले सकती है. तो 152 आर्टिकल इसी का अपना एक्सप्लेनेशन में अपना वाजे है. तो ये अपना चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 5 हैज़ बीन कम्प्लीटेड. नाउ अभी चैप्टर 3 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के पार्ट 5 में मौजूद है. अभी इसको अपना नेक्स्ट क्लास में हम अपना पढ़ेंगे. तो मैंने प्रीवियसली जैसे बताया हुआ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सो ग्रेजुअली हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि वी गेट मच मोर नॉलेज फ्रॉम दिस एसेंशियल वर्डिंग, बिकॉज दिस वर्डिंग बिलोंग्स टू टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973.
मज़ीद अपना आप जुड़े रहें। और अगर इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ द डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग लिसनिंग और ड्यूरिंग एनीथिंग, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, अपने जो भी ग्रीवियंस हो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू, टेक्स्ट करें आप कमेंट्स में या अपना वट एवर जैसे भी आप अप्रोच करें, आई विल डिलीवर ऑल द थिंग्स एसेंशियलिटी दैट यू मे अंडरस्टैंड। बिकॉज मैंने स्टार्ट लिया है जैसे कि टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग माई ओन वर्ड्स, सो इट बिलोंग्स, द वर्ड्स बिलोंग्स टू टेक्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच।